Hi Jai Hind, ma'am. Ankush, how are you? I'm fine, ma'am. How are you, ma'am? That's all good, all good. Okay, ma'am. So, ma'am, many aspirants are waiting for this live session. Oh, Okay. that's great. Yes, ma'am. I will ask my audience, please confirm whether we are audible and visible, audio, video, clear or not. Please write in the chat. Please confirm, students. Okay, fine. Okay, thank you. Thanks for the confirmation. So, good evening, ladies and gentlemen. So, today we have Major Nithi TJ, and I think introduction की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए because ma'am is like very much famous on social media right now. She's guiding aspirants and well known. She has started giving training as a yoga instructor also. Right, ma'am? Yes, yes, Ankush. So, ma'am, with this, I think we can begin this session. Over to you, ma'am. Please address the aspirants. Firstly, thank you so much, Ankush. Thank you so much to you and SSB Tayari for this opportunity. And Jai Hind, or to all the aspirants who have joined. Somebody wrote, "I'm happy." Yes, of course, I'm happy. I'm happy to meet you all after a long time. I'm coming live, that too related to so I'm happy to come live, that too related to SSB. So yeah, that's why I'm happy. Sure, ma'am. And ma'am, like we start this session and सबसे पहला क्वेश्चन मैम मेरे से मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे। आपने मुझे तो बता ही दिया था कॉल पर कि आपका रीजन क्या था आर्मी ज्वाइन करने का, बट जितने स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं इस टाइम वो भी जानना चाहेंगे दैट व्हाट वाज द रीजन, लाइक आपने आर्मी ही क्यों ज्वाइन किया। Um, of course, we have spoken on this. The dream to join army was nothing which suddenly happened when I was in college or anything. That inspiration lied for me at my home itself. My father was in the army, and coming from a defense background, of course, childhood also uh, army mein hi beeta hai. So why army? Of course, because it is a matter of pride that I belong to that fraternity, as I have grown up in this fraternity. And it was interesting if I share that when I was probably in fourth or fifth standard, very young, I always thought of becoming an Airforce pilot. बाद में मुझे पता चला कि उसमें मैथ्स लगता है. So that's why, you know, like I was like, oh, maths मेरे बस की बात नहीं है. And I was like, okay, let's try for. And but those days na Ankush, हमें पता नहीं था कि how we can join army. We didn't know anything about that. The only field where I was aware that women are joining the Indian Army is as a doctor. So फिर next लड़ाई हमारी शुरू हुई. हमने सोचा हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे, and will join the Army Medical Corps. And then I came to know after, I think so, graduation में जब पहुंचे तब मुझे पता चला that there is something called as Women Special Entry Scheme, where you give you're directly screened in for the SSB based on your performance in your college. I said, अरे इसमें तो फिर बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी to come in that merit to, you know, even make it to the SSB was very difficult. But my stars, I should thank my stars that 2007 the news came that army is 2006 the news started floating out that army is going to open up the combined defense services examination for women also. And that's how
I was like, okay, चलो अब हम join कर सकते हैं. Now the dream can be fulfilled. So army was obviously it was a first love. It was somewhere always the first love. Right, ma'am. The charm of olive tree cannot be taken. Absolutely. I mean, let me share this very funny incident. I was in college, and Papa ka ek set of uniform was always kept at home. This was some ritual which mom always had. Ki ek set of uniform will be at home, and although he was posted in the valley at that time, एक बार मैंने ऐसे that innocence, that जोश, उसमें मैंने यूनिफॉर्म पहन लिया. तो पहले तो उसके लिए थोड़ी डांट भी पड़ी कि this is your father's uniform, how can you wear like this. But then mom was having that pride in her face that oh, my child looks so smart in the uniform. So of course olive green has a different charm for of its own. Like there's no two way doubt about it. Fine, ma'am. मतलब आपने बता तो दिया what was the reason behind to join the defense forces. Let's take this discussion forward to the SSB preparation also. Like maximum aspirants those who are here with us, they're preparing for defense, whether it is Army, Navy, Airforce, and even CAPF also. तो मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा आपसे कि थोड़ा सा बच्चों को बताया जाए किस तरीके से लाइक SSB is demanding, right? If we talk about today's scenario, सारी एंट्रीज, it is NDA, CDSE, AFCAT, किस तरीके से बच्चे जाते हैं और क्या assessor की रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे towards a candidate. तो इससे मैम थोड़ा सा I'll share something very interesting. I've never brought it out in any live platform. I've even prepared for CAPF. मैंने CAPF का भी एग्जाम दिया हुआ है. So I prepared for IAS, and the rationale behind it was कि IAS में क्या होता है ना, if you see the IAS IPS study culture, they have a concept called study circle. उनके study circles होते हैं, and it's like वो study circle 3-4 साल एक साथ तैयारी करते हैं, and then ठक they will make it. So similar was my thought process. That I'll join IAS study circle. Although my first CDS I cleared when I was in college final year. So I didn't do any preparation. The only preparation I did was reading newspapers. Roads subah kam what mein I used to read newspapers. Now, when you talk of what are the assessors expecting from the candidates, see, very first thing is don't treat SSB like a normal job interview. It is not a job interview. Firstly, it's not a job. Joining the armed forces is not a job. Secondly, you can't treat this interview at par with any of the other interviews because the requirement here is different. So now the question comes is कि requirement क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है. Mostly theoretically, I would say theoretically the understanding एक aspirant की क्या होती है कि ये 15 qualities मुझ में देखी जाएगी. They will assess me on these. एक VAT है, TAT है, SRT है, ये है, वो है. See, they are methods to test you. Okay, they are not seeing how are you able to clear VAT, are you able to clear that. ये नहीं requirement. They are seeing are you an above average, balanced, well-aware citizen of this nation? Simple as that. That is the requirement. They want good, honest, loyal citizens of this nation. Brave, of course, brave citizens of this nation to join the Indian Armed Forces. They are not looking for something very flashy, something very dynamic. That is not the requirement. The requirement is of above average, intelligent, aware, brave, honest, loyal citizens of this country. अब इसको assess करने के लिए what they have done, they have
listed out some tests. If we go into even yogic scriptures, they talk of 3 ways that we show what we are. हम हमारी पर्सनालिटी को जो 3 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज मनसा, वाचा एंड कर्मा. ओके, आपका माइंड, मनस कैसा है, वाच, स्पीच कैसा है, एंड कर्म, एक्शन कैसा है. And these are the 3 parameters on which the SSB is also assessing. That will give out how balanced a person you are. How अच्छा, आपका thought process तो बहुत है, planning बहुत अच्छी है, but action में आप implement नहीं कर पा रहे हो. So how is these things getting corroborated? अगर आपकी group planning अच्छी है, but when it comes to lecture it, you are not able to speak. When it comes to progressive group task, आप अपनी टीम को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो कि your way of doing the thing is right. Okay, so ये सारी छोटी छोटी चीजों में आपकी क्वालिटीज निकल के उभर के आने लगती हैं. And this is what the SSB is trying to. SSB is not looking at it is not looking at rejecting people, for God's sake. SSB is not there to reject people, but कहते हैं ना, in the judiciary also there's a very famous saying कि एक innocent criminal ना बन जाए, इसलिए इतने लॉज बनाए गए. वैसे ही इन SSB it is like कि एक गलत इंसान अंदर ना आ जाए. So that checks and balances in different form have been kept. Exactly. Like, ma'am, ये चीज मैंने भी observe करी है. Like most of the aspirants, what they are doing, they are just trying to do the rectification. वो किताबें पढ़ते हैं SSB के लिए. Even जब अभी मेरे साथ काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो SSB दे के आ चुके हैं रिपीटर, वो भी इस बात को कोलेट कर पाएंगे. लाइक साइड टेस्ट से पहले दे आर रीडिंग द बुक, वो अपने चीजों को रट्टा मारते हैं, याद करते हैं. व्हाट आई थिंक, किताब पढ़ने का तो हेल्प मिलती है, बट अगर आप चीजों को रट के जा रहे हो पहले से तो वो चीज वहां पे आपको हेल्प कर पाएगी. See, interesting part is now having been in INTCore, I have that exposure of understanding that how human as human beings we communicate. हम सोचते हैं कि हम रट के हम आंसर लिख देंगे and you will be able to, nobody will be able to make out your mistakes. Now there is something called as handwriting analysis. I myself am qualified in handwriting analysis. You try your best. फर्स्ट पेज में आप जितना अच्छा लिखना चाहते हो लिख लो, दूसरे पेज में आपकी असलियत निकल आ जाती. Similarly is in these things. How much can you pretend? आप कितनी चीजों को, there are some actions as human beings we do some actions which are voluntary, कुछ actions हमारे involuntary होते हैं. तो voluntary तो आप हमेशा जय हिंद यशिका मैम, how are you? I'm sorry Ankush, Yashika ma'am has written, so I thought I should reply to it. Thank you so much ma'am. Now coming back to the answer. So non-verbal and verbal communication. Some things we can pretend. कर लेंगे, अच्छे से ड्रेस कर लिया, अच्छे से बाल बना लिए, अच्छे से चले गए साथ. बट जो और अंदर की इंट्रिकेट क्वालिटीज हैं, अब जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ. Do you know when we lie, which muscle of our body can tell us that we are lying? There are many muscles, but one of the main, जो हमारे face पे एकदम से दिख जाता है, there is a muscle here. It's called glabella. अब वो muscle को आप जितनी भी कोशिश करो, you cannot stop the movement of that muscle. Okay, अब ऐसे कई सारे नॉन वर्बल जेस्चर्स होते हैं. बैटिंग ऑफ द आईलिड, आप किस तरफ देख रहे हो, किस तरफ आपका ध्यान है. Left if you are seeing, right when you are seeing, everything has connotation. Now everything, these small things, आपके task GTO testing officers, they are observing you, है ना. Are you getting nervous? Are you gulping?
आप सडनली आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो आप उसमें लाउडली बोल रहे हो, आप जिसमें अंडर कॉन्फिडेंट हो आप धीरे से बोल रहे हो, समझ रहे हो? जैसे बहुत सारे साइंस नो आर इनवॉलंटरी, वी डोंट कम टू नो व्हेन वी, तो आप जितना चाहे रट लो, जितना चाहे पढ़ लो, it is not going to help you unless you try to work and imbibe those qualities जो requirements हैं. Let's talk about situational awareness. Situational awareness आप कैसे develop कर सकते हो? Reading newspaper, making it a habit to read newspaper daily. Not just at a national level, at a community level, at a society level. आपके पंचायत, आपके म्युनिसिपालिटी में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए. That is a aware citizen. Correct. I'll share something very funny. So before joining army, like when I was preparing for my SSB, मेरे को थोड़ा ना I had this phobia regarding heights. Okay. So how did I overcome it? Please, aspirants, disclaimer: don't try it. Okay, don't try it at home. So I have been into karate and lot of physical activities. So मेरे लिए ना कुछ acrobatic चीजें has never been a challenge. So what I started doing, घर की जो छत होती है उसका एक wall होता है, parapet wall. मैं उस पर चला करती थी. You know, so what I'm trying to say, this is at a very gross level that I'm talking about. But हमारे अंदर क्या ये qualities हैं? That self introspection, that self assessment has to happen. That what are the qualities expected and वो क्या आपके अंदर हैं कि नहीं है? Right. And to what degree? मैम यहाँ पर मुझे भी एक इंसिडेंट याद आ गया और ये इंसिडेंट है IMA का. एक ऐसी बातचीत चल रही थी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उसमें. तो देयर वाज वन कैडेट. तो क्या होता है मैम, स्विमिंग पूल जो होता है IMA का, वहाँ पर एक अच्छी खासी हाइट से आपको जंप करना होता है. एंड इट्स अ पार्ट ऑफ टेस्ट. Yeah, it is part of the test. 10-meter jump. Yeah. And that cadet was son of an officer. And वो जनाब जंप नहीं कर रहे थे एंड ही वाज नॉट रेडी. वहाँ पे बैठ गए एंड ही वाज लाइक मुझसे नहीं हो पाएगा. तो क्या किया गया वहाँ पर, फिर NGO साहब ने कॉल किया उनके फादर को कि सर ऐसे से बात हो रही है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एक काम करिए, आप आइए अकेडमी आइए और आप थोड़ा सा जंप करवाइए. So what like sir did, वो अपने बेटे से बातचीत करने लगे एंड ही वाज विद हिम, है ना. वो चढ़ गए थे ऊपर प्लेटफॉर्म पे एंड वो अपने बेटे से बातचीत कर रहा है एंड ही जस्ट पुल्ड हिम और फेंक दिया गया स्विमिंग पूल में एंड ही क्लियर्ड हिज टेस्ट एंड पासिंग आउट हो गई. तो ये था एंड ही वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट हिज सन आल्सो दैट ये बस ऐसे ही डर रहा है और ये आराम से जब एक बार से फेंक दिया जाएगा अंदर, मतलब इसको एक बार बता दिया जाएगा और फिर उस चीज का फेयर भी हट गया होगा मेरे साथ. नहीं, I'll share my own experience with swimming. मैं dead sinker, ठीक है. Swimming का means I can't even buoyancy also doesn't act on me. ठीक है. I can defy laws of physics. इतनी बुरी हालत मेरी स्विमिंग में. ओके, मीन्स मैं जब छोटी थी मेरे पापा मुझे बोलते थे बेटा चल स्विमिंग पूल चल, और मैंने भाग जाना कि नहीं मेरे को स्विमिंग पूल है. But see, that's because of an incident, you know. I hurt myself when I first tried. तो कई बार ये फोबिया बैठ जाता है. तो मेरे पिताजी बोले मेरे को बेटा ऐसा है, स्विमिंग पास नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे तुम अफसर बन पाओगे. So that always remained in my mind. So what I did, जब हमें पहली बार जंप करा थे, हमारे टाइम में OTA में 10 मीटर जंप नहीं था, 5 मीटर था. So जब जंप की मेरी बारी आई, I told my उस्ताद, I said कि साहब आप ना धक्का मार देना. So he was like, what is this nonsense, धक्का मार देना. मैंने कहा नहीं साहब एक बार आप धक्का मार दो, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं. And trust me, thereafter I did all my jumps without the support of the ustad. And to the extent
that the PT instructor started calling me, he was a captain, and he started calling me commando, because I would jump with my eyes open like a commando, like stick, that perfect posture. I used to jump inside the water. So happens, but fear is a very interesting process in our us, and fear is necessary. Fear is very necessary. Fear करता क्या है ना, जब आपको डर लगता है, it releases a certain kind of hormones in you. तो आप दो सिचुएशन में होते हैं, या तो फाइट होता है या फ्लाइट होता है, या तो आप उसको लड़ोगे या आप उससे एस्केप करने का तरीका ढूंढोगे. ओके, नाउ दैट fight and flight mechanism is what is the reason that we learn to survive. We learn to survive challenges. When we fail to give this fight and flight response, that's where we start failing. So it's very important. इसीलिए ना कभी कभार डरावनी मूवी भी देखनी चाहिए, because those hormones when they secrete, they are very good for your body. Exactly, ma'am. And ये जो एक डर होता है वही इंसान को फिर आगे इन टर्म्स ऑफ सक्सेस आई विल से, अगर डर ही नहीं रहेगा एक एस्पिरेंट के अंदर तो फिर वो उतनी हार्ड वर्क भी नहीं करेगा और पढ़ाई भी फिर वो उसी हिसाब से करता है. मैम, टेकिंग दिस डिस्कशन फॉरवर्ड, मुझे बस थोड़ा सा ये और पूछना था, लाइक मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स हु आर फ्रॉम द सिविल लाइफ, लाइक जो फौजी के बच्चे हैं उनको तो इसकी जरूरत नहीं है, बट दोज हु आर द सिविलियन, उनको अपना लाइफस्टाइल, उनको अपना रूटीन क्या रखना चाहिए? एज वी सी दे आर द कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स, अगर वो फौज ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन टेल देम दैट व्हाट कैन बी देयर डेली लाइफ रूटीन. Okay, now let me share you something. I have many friends, फौजी बच्चे, जिनका रूटीन डामाडोल है. But yes, more or less we are used to a certain routine, a certain culture. So if you are from a civil background, अगर ये बच्चे जैसे civil background से हैं, तो first and foremost which they should include in their habit is eating at the right time, sleeping at the right time. ये दो चीज तो बहुत जरूरी है. आप कितने बजे सो रहे हो और आप कितने बजे जग रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Second thing which they should do is include some form of sport in their life. What I see these days is कि life has become very sedentary. बहुत sedentary हो गई है life बच्चों की ना. स्कूल का करिकुलम ऐसा हो गया है. को करिकुलर एक्टिविटीज की जब बात करते हैं तो स्पोर्ट्स इज जनरली इन आवर इंडियन सोसाइटी थोड़ा ना, स्पोर्ट्स का हमेशा ये एक सेटबैक रहा है कि ये क्या खेल रहे हो, बैठ के पढ़ाई करो, द टिपिकल वे ऑफ हाउ थिंग्स आर. So in that case, it is very important to include a sport. Sport से क्या होता है, पहली बात, when आपके अंदर से ये चोट लगने का, ये छोटे छोटे डर हैं ये हमारे, हाय चोट लग जाएगा, गिर जाएंगे. जब 4-5 बार, जब 10 बार गिरोगे ना, छोटे मोटे खाओगे, जब हाथ हड्डियां वड्डियां टूटेगी, तब समझ में आ जाएगा कि अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है ना. जैसे कि नई गाड़ी आप लेते हो, नई गाड़ियां, नई मोबाइल, हाँ आजकल मोबाइल का एग्जाम्पल इज बेटर. नया मोबाइल लिया है ना, अगर नया मोबाइल गिर जाए क्या होगा? पहली बार गिरेगा तो बिल्कुल हार्ट अटैक ही आ जाएगा हमें, है ना. तो वो 1-2 बार गिर गया, फिर आपको लगा अरे ठीक है यार, टूटेगा तो देखेंगे, अभी टूटा नहीं. We need to become adaptive to environment. It is very important that we add movements. उसको आजकल के ट्रेंड में मूवमेंट थेरेपी और ऐसे चीजें बोली जाती हैं. मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. मोबिलिटी गिव्स अस कॉन्फिडेंस. जहां आप कैब से जा सकते हो, आप कहीं से, अगर जहां आप चल के जा सकते हो, अगर आप कैब से जा रहे हो, गिव अवे द कैब, ट्राई टू वर्क डाउन, यू विल लर्न लॉट. आप थोड़े एनवायरमेंट में और ढलने लगते हो. So it gives you better knowledge of your environment. You are using more of your motor skills. You are using more of your observation skills. Similarly, sport में क्या होता है? स्पोर्ट खेलने से ये फायदा है, एक तो फिजिकली you will be fit.
you will learn team spirit, you will learn leadership qualities, and you will also be a very आप एक environment में कुछ challenges आए तो आप ढलना जो बोलते हैं ना, adaptability improves. So sports is very important. Sports में table tennis of course is a good sport, but please get into more physical sports. Okay, जहाँ पे थोड़ा धक्का मुक्का, थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा ये सब हो. Because see, वहाँ आप जाओगे, आप SSB में, वहाँ पे nobody is going to pamper you. आप अगर वो Tarzan swing नहीं कर पाए, then you are of no use. Okay. So you have to have some shoulder strength, some muscular strength, some abdominal strength. ये सब जरूरी है. Somebody wrote very interesting. Sports breaks that inertia. है ना, एक अपने अंदर का एक inertia, एक जो झिझक होती है, वो झिझक हटाता है sports. So if you add sports, add sports, add reading. Reading is very important. I won't say कि just stick to military books. You can read any books. But yes, military books का फायदा ये होगा कि थोड़ा एक historical perspective वगैरह पता हो तो थोड़ा एक it gives you more confidence when you go for the interview. And newspaper, of course, newspaper reading has to be part of the. And अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हैं, at least keep 2 hours of table study. Table पे बैठ के, when I say table, it's a table. It is not a bed, it is not a sofa, it is not a chair, it is proper table, chair जो हम स्कूल में पढ़ते हैं. Why? The environment facilitates your focus and attention. Okay, तो आप अगर बेड पे लेट के आप पढ़ रहे हो, वो दिमाग में कभी नहीं जाने वाला है. You have to have table study, proper table study. Okay, so all those things are very and of course know more about the organization. थोड़ा आप organization के बारे में जानो, पढ़ो उसके बारे में क्या है. Try to communicate. आजकल तो social media है, so try to follow, communicate, observe how army officers, how armed forces personas, how do they conduct themselves. थोड़ा वो सब आप follow करोगे. See, these days that exposure is not a challenge. But ये थोड़ा अगर एक routine बना लेंगे, I don't think so then it will be very difficult to clear the SSB. One thing which is the key is a routine and consistency in the routine. These two are very important. Yes, ma'am. मतलब स्टूडेंट एस्पिरेंट क्या करते हैं, वो अपना रूटीन तो बनाते हैं बट दे आर नॉट कंसिस्टेंट इन फॉलोइंग दैट. 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे एंड देन दे आर नॉट फॉलोइंग दैट. दैट इज अ प्रॉब्लम. करेक्ट. उसके लिए जरूरी है कि आप रूटीन जो बनाते हो, बी रियलिस्टिक एंड मेक अ सस्टेनेबल रूटीन. अगर आपको लगता है आप दिन में 1 घंटा दे सकते हो, इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन, बट गिव दैट 1 hour डेली. दैट इज योर कमिटमेंट. मैम, टेकिंग दिस डिस्कशन फॉरवर्ड, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, एक जो एस्पिरेंट होता है उसका एटीट्यूड होता है, राइट मैम. अब वो एटीट्यूड हर टाइप का होता है. देयर आर n नंबर ऑफ कैंडिडेट. किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का न्यूट्रल भी हो सकता है, किसी का नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है. तो किस तरीके से व्हाट एग्जैक्टली मैटर्स. मैं आपके SSB टर्म्स में नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम टॉकिंग इट अबाउट इन टर्म्स ऑफ गुड सिटीजन इन ऑल प्रोफेशन. तो एक अच्छा एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकता है? एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप करने के लिए आई पर्सनली फील इट्स इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ व्हाट आर योर इंटेंशंस बिहाइंड डूइंग दैट. अगर आप कहते हो मेरा इंटेंशन ये तैयारी करने का सिर्फ एक अफसर बनने का है, सो सिट विद दैट इंटेंशन एंड देन थिंक कि क्या वो काफी है. इज इट एनफ? डज it have the depth enough to inculcate a positive and a sustainable positive attitude in me? तो इस चीज को, एटीट्यूड को हम you must have heard this thing,
attitude defines your altitude. Exactly. एटीट्यूड डिफाइन क्यों क्यों बोलते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं उस एटीट्यूड के पीछे आपका इंटेंशन, आपके चीजों को जो आप करने जा रहे हो उसके प्रति आपका एटीट्यूड तभी अच्छा होगा अगर आपके इंटेंशन सही है, वरना तो सब फेल है. So to develop the right attitude is to first sit and ask yourself this question, that why are you doing this? And the why cannot be something. I always tell these two children who approach me, I always tell them, ये आपका why सिर्फ इतने में नहीं होना चाहिए कि मुझे अफसर बनना है या मुझे यूनिफॉर्म पहनना है, क्योंकि अगर आपने अपना why इतना सा रख लिया ना, then your why will end on the first day of your like commission हुए and your why is over. Exactly. So it has to have some deeper meaning. एंड मैम लाइक यहाँ पर मैं इसी और ऐड करना चाहूँगा, लाइक एटीट्यूड इज समवॉट हमने तो देखा है when we are at college, like, so we are just building our attitude, we are in the development of a personality. So even the grooming, that what kind of mentors you are having, और आपको किस तरीके से किस डायरेक्शन में आपको चीजों को लेके जा रहे हो. हाँ, इट्स ऑब्वियस दैट आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हो, आप खुद मेहनत करते हो, रिसर्च करते हो, बट इट्स द रोल ऑफ मेंटोर ऑल्सो, आपको जो गाइड कर रहा है. Absolutely. Mentoring, mentorship, the mentor you choose, आपको पता है आपके प्लस माइनस क्या है, आपको पता है कि सामने जो पर्सन है कैन दे सपोर्ट यू, एंड वंस यू choose somebody as your mentor, have full faith in them and have patience with them. वो जो बता रहे हैं उसको करके तो देखो. Now why choosing the right mentor is important? Somebody who has gone through the SSB, have cleared, have become an officer, have lived a life. They have so much to tell you about the whole experience. Somebody, अब बच्चे मेंटर भी कई बार they select, they look for कि easiest available क्या है. अब easiest available, if somebody has gone to SSB for once, he can only tell you what is in the SSB, वो उतना ही बता पाएंगे. Somebody who has cleared the interview, somebody who has made it to that place is the person who can guide you. Correct. अगर उस डायरेक्शन में, जब हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम देखते हैं, जीपीएस यूज करते हैं, अगर उस रास्ते पे कभी वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कभी गया ही नहीं है, what way it will show you if the satellite has not gone on that way? Correct. So mentor is very important. Who you choose as your mentor, and you know yourself the best. तो आपको पता है कि मेरी ये कमियां हैं और इसमें सपोर्ट करने के लिए मेरे को ये मेंटर, इनकी गाइडेंस मुझे हेल्प कर सकती है. In yogic parlance there is there's a saying कि गुरु कृपा केवलम, यानी आप मेहनत जितनी भी कर लो, if you don't have the grace of the guru, if you don't have the direction of a mentor, आप कभी उस पाथ में सक्सेसफुली नहीं जा सकते. You need a mentor. A right mentor is important. Yes. Somebody who has walked the path, somebody who has lived that life is a better preferred mentor. Exactly, ma'am. And मैम एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी आपने बताया था that these days most of the aspirants are into the digital world. ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और they are using cell phone. आजकल बहुत बड़ा शौकीन हो गया बच्चों का मोबाइल का यूज करना. So like they are not doing any physical activity. So what exactly this is creating? कुछ बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं आगे जाके अगर वो फेलियर को फेस करते हैं. राइट. अब जैसे अभी हमने देखा है बहुत सारे बच्चे यूपीएससी देते हैं, अच्छे से लेवल के एग्जाम देते हैं, व्हाट एग्जैक्टली उनका फिर जो है मूड भी उस हिसाब से हो जाता है. अगर उनको सक्सेस नहीं मिल पाता है टाइम पे, दे आर फीलिंग डिप्रेस, ना उससे ज्यादा किसी से बातचीत करते हैं.
तो किस चीज पे आप थोड़ा सा बताइए बच्चों को, जैसे बताया भी I'll आपने जी। Yeah. So I'll share something very interesting. A couple of last Friday we had a webinar in our institute in Morarji Desai National Institute of Yoga. So we had a lecture on. We were celebrating the Chandrasekhar Azad week on in the memory of his martyrdom. और उसमें एक टॉपिक था freedom from fear. Okay. So the speaker shared something very interesting and it struck me like, अब हुआ क्या है, कॉग्निटिव इवोल्यूशन देखते हैं हम, है ना। कॉग्निटिव एवोल्यूशन जैसे ही हिट किया, हम उससे पहले हंटर थे, गैदरर थे, सेटलर हुए, अलग अलग एग्रीकल्चर में आए, सब चीज किया हम। जैसे कॉग्निटिव इवोल्यूशन हुआ, वी स्टार्टेड क्रिएटिंग easier means of doing things. Technology came into play. I mean, we were just looking back and we were discussing कि एक टाइम था हमें कितने 100 200 नंबर याद हो जाते थे फोन के। अभी तो घर वालों के फोन नंबर याद नहीं है हमें, है ना। So what is happening? The human evolution is not that fast as the technology evolution has happened. So at the end of the day, हमारी सोसाइटीज चेंज हो गई, टेक्नोलॉजीज आ गई हमारी लाइफ में, बट जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स वही है। The body needs to work out, the body needs to go out, the body needs to struggle, the body needs to fight. और वो सब जब नहीं होता है तब आपको फिजिकल इश्यूज होते हैं। और जब द माइंड नीड्स टू इंटेलेक्चुअली एंगेज, द माइंड नीड्स टू ऑब्जर्व, एनालाइज, वॉच, है ना, मॉनिटर, ये सब करना है, माइंड को बाहर जाना है। अब माइंड भी बंद हो गया, so it is now turning into anxiety, into depression. So जो वो fight and flight, what I referred to, the fight and flight which had to happen for more serious things, वो क्या चीजों पे होने लगी, more mundane things. Okay. So body response, the human biological evolution hasn't happened that fast, and इसीलिए आजकल बच्चे who are more on the devices are facing challenges, क्योंकि that virtuality has taken so much into their lives, इतना ज्यादा स्पेस ले लिया है वर्चुअलिटी ने उनके लाइफ में कि बात करने में भी उनको डर लगता है। And I see this trend where simple social etiquette, social behavior, इसमें भी बहुत चेंज आया है बच्चों में, if you notice. एक टाइम था कि हम तो सामने से कोई अनजान भी जाए तो हम, अगर वो एज में बड़े लग रहे हैं तो हम उनको देख के मुस्कुरा के नमस्ते बोल देते थे। पर आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे भी बच्चे अगर मुझे मैसेज करते तो कई बार वो हाय मैम ही होता है। इट्स ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सोशल बिहेवियर हैज चेंज्ड, आवर ethos have changed, so many things, but the requirement of army hasn't changed. ये बच्चों को याद रखना बहुत जरूरी है। आर्मी में आज भी एक ऑनेस्ट एक बंदे की जरूरत है फॉर सोल्जरिंग। like I always tell कि आप 11 महीने जो ट्रेनिंग करते हो इन ओटीए, या 18 महीने आप आईएमए में ट्रेनिंग करते हो, इट इज नॉट टू बिकम अ गुड ऑफिसर, it is to become a good soldier. The training is to become a good soldier. Officer तो आप कब बनते हो? On the last day. And your training to be a good officer starts thereafter. But वो जो 11 महीने और 18 महीने आप ट्रेनिंग करते हो, या फिर एनडीए में जो बच्चे 3 साल वहां पे ट्रेनिंग करके आते हैं, what is that? That is all to become a good soldier, a good leader. तो requirements वही है आर्मी की। Now, it is very easy for us to say कि switch off the devices. वो भी नहीं possible है।
So you have to strike a balance. You have to strike a balance. So discipline, self-disciplining is very important. एग्जैक्टली मैम, मतलब अभी जैसे आपने मेंशन किया, बट फिजिकल आपको स्पोर्ट्स भी खेलना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ आप लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हो उसे यूज करना भी जरूरी है, तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. In Delhi, I'm presently in Delhi, as you know. Generally on weekends, there is this particular bookstore. It's kind of an event house, you can say. It's called Kunza. So the other day, I told my husband, I said, "Ki Rajesh, I have to go for a book reading session." He said, "वहाँ जाके किताब क्या पढ़नी है? यही किताब पढ़ लो." The typical way of कि यार इतना दूर कहाँ जाओगे तुम? But that's not the thing. जब आप वो किताब पढ़ते हो, 4 लोगों से आप मिलते हो, आप उनसे जो बातचीत करते हो, वो जब आपसे पूछते हैं कि भाई तुम क्या पढ़ रहे हो, that sharing of information, that bond, that is very different. That is very different. So that physical communication is very important. And try, children, aspirants can try to. That's why I spoke of study circles. वो स्टडी सर्कल का बॉन्ड इतना सही हो जाता है, यू वुडंट बिलीव. हम लोग 6 लोग थे इन अ ग्रुप, एंड द 6 of us made it into the army. 6 of us. Rather, not just the 6 of us, there was one more, my senior. वो भी हमसे डिस्कस करते रहते थे. He made it to the Airforce, then one made it into the IMA, then I made it into the OTA, then the next made it into IMA again. So it was like ऐसे selections हुए हैं. And we all had only one mentor. He used to prepare us for IAS की पढ़ाई. तो ये है. So this has to come back, because at the end of the day we are human beings. हम कितनी देर इसमें ट्रैप होके रहेंगे? Now the irony is all this we are discussing in a Instagram live. Right. And we'll plan one offline session also. Yes, we have to go on that. कुछ नहीं, घास पे बैठो, एक साथ चाय पियो, पेड़ देखो, हवा देखो, उसका मजा ही अलग है. And then discuss. Those things are very different. Exactly, मैम. मतलब ये चीज मैम मैंने भी फील करी है, because I was living with my father, और कैंट की जो लाइफ थी, इट वाज लाइक 4 दीवार, है ना. मतलब आपको स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, कैंट में ही रहना है. तो एक्सपोजर उतना पाया था मुझे, बट व्हेन आई केम टू दिल्ली एंड व्हेन आई डिड माय बीटेक, तो मुझे एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला. तो मैंने बीटेक करी और मैंने अपनी पढ़ाई करी, तो एक उस चीज का फिर एक अलग ही आपकी लाइफ स्टाइल में, आपकी पर्सनालिटी में चेंज हुआ. आई एम अ सिंगल किड अंकुश, ठीक है. तो इसलिए कोई मेरे को बोलता है ना कि हम बोर होते हैं, तो या कोई बोलता है कि अरे हम बोर हो जाते, तुम अकेले कैसे रह. मैं कहती दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन. You have your own things to do, and trust me, since childhood I have been into so many activities. I used to participate in quiz. I used to means sports हुआ तो hardly one odd game I am not there. Otherwise I was part of every event. So see, at the end of the day ये हमारी लाइफ है. हम बैठ के या तो रोते रहे कि हाय ये हो रहा है, वो हो रहा है, और we get up and take stock of things in our hand. Sometimes you have to do things. See, again, what adaptability comes in. कुछ चीजें शायद आपको पसंद नहीं होगी, इस रास्ते से जाना पसंद नहीं होगा, या उस रास्ते से इस टाइम पे जाना पसंद नहीं होगा. You will have these challenges, but that is what you are getting prepared for. जितना जो एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है आपके अंदर एज अ पर्सनालिटी, वो बाहर स्टेप आउट करके ही आएगी. बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है. मतलब इन टर्म्स ऑफ कोई भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्पेशली द गवर्नमेंट सर्विस, और इवन आप प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हो, तो अगर आपकी अंदर से हिचक ही नहीं निकलती है, इफ यू आर नॉट दैट ओपन माइंडेड, तो फिर आप एक अंडर कॉन्फिडेंट, और आपको ऐसा
रहेगा ही अंदर ना, थोड़ा सा डर रहता है। एब्सोल्यूट। मैम एक क्वेश्चन आया बच्चे का, सर हाउ टू हैंडल योर स्ट्रेस, हाउ डू यू हैंडल योर स्ट्रेस? हाउ डू आई हैंडल माई स्ट्रेस? अच्छा, पहली बात तो स्ट्रेस इज अ मोर रिसेंट टर्म। हमारे व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी, अगर हम स्ट्रेस बोल देते ना तो हमें घर में सीधे थप्पड़ पड़ना था। व्हेन वी वर इन कॉलेज वी डिडंट हैव स्ट्रेस एज अ टर्मिनोलॉजी। अब हो क्या रहा है कि पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू डू थिंग्स टू सर्वाइव फॉर लाइवलीहुड, दिस दैट। बच्चों के the things, so in handwriting, in graphology we say that if the father is the one who encourages and the mother is one who will always caution you. अब अपनी लाइफ में देख लो, है ना, मदर हमेशा बोले कि बेटा ध्यान देना, बेटा ऐसे करना, बेटा देख के। फादर भी अरे ट्राई करके देखो यार, शेर बेटा हो तुम मेरे। अब over a period of time, these personalities have kind of changed. These roles, either they have changed, either they have diluted in certain cases. In certain cases, life की दौड़ ही ऐसी fast हो गई है that parents are not able to invest that kind of communications. So in such cases, I sincerely request everyone, please have one confidant in your life. It can be a friend, it can be your brother, sisters, जो भी हो सकता है। आप अगर एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो आपके मेंटर हो सकते हैं। एंड आप उनसे जब शेयर करते हो तो ये मत सोचो कि I am becoming vulnerable. No. The moment you take it out, वो आप उसको शेयर करो। अगर ये भी डिफिकल्ट है आपके लिए, स्टार्ट जर्नलिंग। लिखने से क्या होता है? So, one of this exercise you can do it. Sit down and write. What are your reasons for stress? एंड जब आप लिखते हो ना, इट्स लाइक it's that this technique is called you are making your fear naked. ठीक है, बेसिकली यू आर मेकिंग योर फियर नेकेड। आपके जो भी डर है, जो भी चिंता है, उसको आप एक पेज पे लिखो। व्हेन यू राइट इट डाउन एंड यू सिट एंड थिंक, यू विल रियलाइज कि यार हाफ ऑफ द थिंग्स आई कैन रिजॉल्व माई सेल्फ। एंड यू एटलीस्ट, अगर नहीं रिजॉल्व कर सकते, एटलीस्ट आपको पता है कि सामने गड्ढा है, आप अंधे कुएं में नहीं गिर रहे हो, है ना। सो यू विल बी प्रिकॉशंस। If you don't know how to jump that well, what will you do? You will take support. You will ask a friend, ask a mentor, ask somebody who is confident, who doesn't judge you. ये बहुत जरूरी है। आज के जमाने में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये बच्चे फेस कर रहे हैं। That is that every moment of being judged. There is so much pressure on these children to be perfect. इतना pressure. You go back to your childhood, Ankush. Let's go back to our childhood. हम पे तो कभी इतना pressure नहीं था। Why? Because with technology coming in, हम सोचते हैं जैसे कंप्यूटर हर चीज को perfect कर देता है, हम खुद as humans वो करें. It's practically impossible. And somewhere parents have to be understanding for that. और गलती हो जाए तो ठीक है यार, गलती चलता है ना। गलती करना इज नॉट अ क्राइम। गलती करना बहुत अच्छी चीज है। गलतियां होंगी तभी पता चलेगा कि हाउ यू कैन यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ। गेट आउट ऑफ दैट थिंग कि गलती करने से कोई सूली पे लटका दे। Yes, ma'am. Mistakes are part of life. हम गलती से ही सीखते हैं। Absolutely. मैम जैसे आपने ओटी में ट्रेनिंग करी है, तो कुछ किस्से ओटी के हो जाएं, कोई ऐसे इंसिडेंट आप बच्चों को बता पाए? Okay, so this is a very interesting incident and I love sharing this incident. Recently we celebrated the
day of remembrance of Dr. APJ Abdul Kalam. So I really love sharing this incident. Academy का पहला दिन था अंकुश. That was the first day of academy, and we had a guest lecture by Dr. Kalam. It was what do I say? It was very different. It was so special कि आप जिसको live भर आप सोच रहे हो, you've just heard him, you have just seen him, and आपने उनकी किताबें पढ़ी हैं. ऐसे एक personality जब आपके सामने lecture देने आते हैं, it was a very amazing experience. And after the event got over, हम सबको बोला गया कि you have to interact with Dr. Kalam. And very gentle, very amazing personality he came. And मैं तो सामने खड़ी थी, मेरे तो literally I was shivering that it is, but आप show नहीं कर सकते हो because you are a cadet. Okay, so then he said that I mean I was thinking what will I speak to him, मैं उनसे मिलूंगी तो क्या बात करूंगी, है ना? So then I said that, sir, you are an inspiration for the youth like me. तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, no my child, it is people like you, it is the youth that inspires me. So, as a leader, it is so much intriguing. कितना अच्छा लगता है ये सोच करके कि आपके सामने एक president हैं आपके country के, and he says that we are his inspiration. So much humility. So, why I shared this is somewhere in our lives to prove ourselves, हम कहीं ना कहीं ह्यूमिलिटी भूल जाते हैं. एंड ह्यूमिलिटी होना, एक सरलता अपने पर्सनालिटी में होना बहुत जरूरी है. Recently in one of the podcasts I heard one of the leaders, she was saying that Chanakya Nithi says that if you are a true leader वही है जो अपने पोजीशन को ऐसे दे सकता है, just like that. That's a true leader who's not attached, who's detached of the results, who's detached of that. That is true leadership. So that humility is very important. Technology somewhere again, takes away so much from us, and one of them is this humility, this sensitivity, this empathy कि यार सामने वाला भी इंसान है यार, है ना? Exactly. So this is one memory, a lifetime memory for me, I think so. Great. मैम एक और क्वेश्चन आया बच्चों की तरफ से, हाउ टू डेवलप द स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी टू ट्रस्ट द प्रोसेस. To trust the process. Yes, ma'am. Interesting question. Who asked that? Very smart children. How to develop okay. How to develop the strong mentality to trust the process. The only way you can trust the process is if you believe in the present. If you believe कि मैं आज actions करूं तो मैं कल उसके फल मिलेंगे मुझे. When you believe that your plan is right, when you believe that you are putting your efforts rightly today, as of now, तब आपको process के ऊपर भी विश्वास आ जाएगा. वरना तो खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, है ना? To trust the process, it's very important that you work hard enough. Right. It's very important, and I think so. Only then you can be perseverant, and then you can give out the thing in the required fashion. जैसा expected है
आप तभी कर सकते हो अगर आपने उसमें अपना 100% डाला। नाउ दिस 100% पुटिंग इन, आई हैव पुट माई 100%, ये बहुत लोग बोलते हैं, बट आई विल टेल, आई विल रिक्वेस्ट whoever says that, एक बार बैठ करके सोचो, अपने आप से आप पूछो कि क्या आपने 100% डाला है। फर्स्ट ट्रस्ट yourself, no? How can you trust yourself? First, you can trust yourself only when you reconcile with your plus and your minus. एक बार आपने अपने आप से reconcile कर लिया, आपको प्रोसेस पे भी विश्वास हो जाए। Exactly, ma'am. And we need to accept the reality. मतलब आप जहाँ पर भी हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अपने बारे में पता है that how much you know and आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। तो अगर आप रियलिटी में जीते हो, यू आर इन द प्रेजेंट, then it's obvious आप कर लेते हो उन चीजों को ना। और हाँ, अब आजकल तो मैम देखा है इतनी सारी चीजों का सभी बच्चों के पास ऑनलाइन और इवन इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और इतनी सारी फैसिलिटीज मिल गई हैं। बट इफ वी टॉक मीनवाइल बिफोर 2015 एंड इवन बिफोर 2010, 2005-6 की बात करें, तब तो इंटरनेट, मोबाइल फोन कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था। और जी, उस टाइम पर भी बच्चे पढ़ाई the process has proved itself with time. So so you have to have faith on that. You have to have faith on that. And because the process was right, that is why the Indian Army has proved itself in time and again in war, in all combat situations. Exactly. राइट मैम। एंड एक अच्छे लीडर की बात करें तो एक अच्छा लीडर वो होता है जो सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, not the problem. Not problems. He always exactly. He always found the solution. Absolutely. If you are overthinking on the problem, that means you are speculating. आप बस अपना time waste कर रहे हो वहाँ पे। Process के ऊपर तो आपको फिर you will never have faith on the process if you are not working towards the solution. Right. मैम थोड़ा सा लाइक मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आप ओटी जब आपने ज्वाइन किया तो इनिशियली हाउ वाज द डेज लाइक, और भी वहाँ पे कैडेट्स होंगे आपके साथ, इवन एलसी, लेडी कैडेट और बॉय कैडेट, तो किस तरीके का माहौल था ओटी में? और लाइक कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनसे भागा दौड़ा नहीं कर रहा होगा, कुछ बताओ ना बच्चों को ओटी की लाइफ स्टाइल। Yes, so when I was going to academy, मैंने पापा से पूछा, मैं asked my father कि पापा what do you suggest, means आपकी एडवाइस क्या है, मैं I'm going to the training academy. He said don't get injured, चोट नहीं लगने देना, बस बाकी सब तुम कर लोगे। So see, all kind of children come there, सारे different type के cadets. I was myself overweight. I lost nearly 20 kilos before joining academy. It wasn't easy for me. तो वहां आप जाओ तो हर किस्म के आपको बच्चे मिलते हैं। एंड थैंकफुली ओटीए, थैंकफुली क्या बोले, अगर ओटीए में तो फिर भी आप थोड़े से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद गए होते, बट देन एट द एंड ऑफ द डे यू आर जस्ट लाइक एनी अदर स्टूडेंट, you know the life is very busy there. OTA especially, I'll tell, it is very different from other academies. Reason being, आपको उन्होंने वो सारी ट्रेनिंग जो 18 महीने में बाकी एकेडमीज में है, IMM में है, that entire training has to be done for you in just 11 months span. So सांस लेने की तो फुर्सत है ही नहीं आपके लिए। And during our time, of course, the academy was very different. Now you have the cabin culture, cabins हैं। हमारे टाइम में barracks होते थे। So that coordination, that team management is of very different nature at that. Means आपके सामने ही आपका senior है ना? अब आप खड़े हो या बैठो कुछ समझ में नहीं। आपको हमेशा एक डर में रहते हो कि कब आपको रोलिंग काटने बोल दिया जाएगा, है ना? Means you're always ready to roll. Academy life is very, very hectic, very it's always on the toes. And उसके बाद जब आप यूनिट पहुंचते हो तो आपको लगता है इतना टाइम में मैं क्या करूं,
What should I do of all this time? And see, you should understand the requirement of the training academy also. Okay, so वहां पे जब आपको जितना आपको effort डालना पड़ता है, that's why I keep telling all these aspirants who are preparing for SSB, listen to what your training, what your testing officer is telling you. वो बहुत जरूरी है. होता है क्या, पहले से ही प्री कंसीव पढ़ के चले जाते हैं, फिर वहां पे वो टेस्टिंग ऑफिसर कुछ और गूगली फेंक दे, तो देन दे आर लॉस्ट. सो सिमिलरली हैपेंस इन एकेडमी. गो एज अ क्लीन स्लेट. फॉरगेट कि आप अपने कॉलेज में फन्ने खान थे, आप ये थे, आप वो थे, वो सारा भूल जाओ. एंड यू नो, ऑन द फर्स्ट डे तो हमारा तो सबसे पहले बाल कट गए थे. And you know, we were called to the ante room and we were told to get into tank position, महाराजा position जो है. और हमें यही बोला गया कि भाई आप जितना जो आप गुरूर लेके आए हो वो सारा यहीं जमीन में निकाल दो. Forget whatever you have learned. You are starting a very new chapter of your life and you should take it in that stride. Take that day as it comes. आज का आज देखो, कल की कल देख लेंगे क्या होना है, आज का पहले देख. Right. So to survive in academy you have to live in the present. To be very honest. Exactly. मतलब मैम मेरा एक क्वेश्चन पूछने का रीजन ये था, लाइक हमने देखा है दैट बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं एकेडमी को. मतलब दे आर लीविंग द एकेडमी विद अ वीक, एक हफ्ते में, 15 दिन में उनको पता लग जाता है दैट ये तो आपने ज्यादा बोल दिया. There was one girl with us. She was, I think so, the All India rank third या first, I don't know. She came. उस दिन Wednesday था. So Wednesday we have our club activities. And she came. तो जिस दिन क्लब होता है तो माहौल ना एकेडमी का थोड़ा शांत सा, थोड़ा गर्म उतना नहीं होता है. It is very quiet on club days. And she came, she looked and she said, अरे वाह, ये तो बड़ा ऑफिसर लाइक चीजें हो रही हैं, तो ये तो बढ़िया है. अच्छा, फिर हुई रात. जैसे रात हुई तो कार्रवाई शुरू हो गई. रात में हमारे सीनियर्स शुरू हो गए, फिर तो चलता रहा हमारा रगड़ा. फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी हैड आवर यूजुअल रूटीन एंड वी सी दिस गर्ल इज नोवेयर टू बी फाउंड. ओके. Incidentally, she was a serving officer's child. So what I'm trying to say is, don't go with this idea that it is going to be everything very बहुत अच्छा होगा, सॉफ्ट होगा, सिंपल होगा, या फिर ना जो आप ये पोस्टर्स में देखते हो, यू नो, वेयरिंग रिबन एंड वेयरिंग अ स्मार्ट यूनिफॉर्म. वहां जाके ऐसे धूल मिट्टी होंगे ना, बिल्कुल धूल में मिल जाओगे. ठीक है, तो don't go with this idea that you know, academy is gonna be all that flowery. Even जो OTA के videos वगैरह जो बने हैं, documentaries बनी हैं, that is very limited part. That is like not even 1% of the training lifestyle. Training is धुआं है, वहां धुआं निकलेगा आपका और कुछ नहीं होगा. So don't go with preconceived notions कि मैं तो ऐसे हूँ. So that's why your goals cannot be limited that I want to become an officer. Right. You have to become a soldier. आप soldiering करने जा रहे हो वहाँ पे. Tomorrow if you go in a combat situation, now women officers are getting posted to the field also. हम भी जाते थे field में, but now to the harder field. You know, they have started going on independent taskings. So when in such scenarios, तो भाई आपके सामने कोई भी आ सकता है. Right. You know, I don't know. Are you aware? Recently, this one Airforce officer, she was literally stabbed by a what do you call a burglar. Squadron leader Archita, if I'm not wrong. She was stabbed by a burglar. She fought him. She died, unfortunately. God bless her soul. But she fought him. अरे ये ताकत चाहिए हमें हमारे, you know, we want that strength to come in our younger generation.
you can't be soft, and you can't just be gentle. नहीं. Be soldiering is bloodbath. It's life death situation. आपकी एक Exactly. गलती, your one stupidity, your one ignorance, your one negligence can cost the life of someone. So please take it Exactly. in that seriousness. Take that as a responsibility. Don't see कि उनको कार मिल रहा है, जिप्सी मिल रही है, घर मिल रहा है, Canteen का CSD फैले से. Hmm. I have served for 10 years. I won't have even gone 10 times to the canteen, to be very honest. क्योंकि आपके पास ना समय होता है, ना इतना इंक्लिनेशन होता है, ना इतना वो होता है. आपको लगता है यार जहां जो मिल रहा है जल्दी से लो और चलो. Just get the work done. You're getting it. So don't see the flowery side and come to the organization. This is not a corporate organization कि आप pays and perks देख रहे हो. Then you will only Right. cry. Right on. And like ये चीज होती है, like हम जैसे देखते हैं एसएसबी में रिकमेंडेशन रेट जो रहता है, कभी 200 बच्चे पहुंचे, 200 में से किसी को भी नहीं लेते हैं, बिकॉज दे आर नॉट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया टू बिकम एन ऑफिसर. तो जैसे मैं एसएसबी देने जाता था, तो मेरी जो मैनेजर थी वो मुझसे पूछती थी, अंकुश तुम इतनी बार छुट्टी ले चुके हो, इतनी बार एसएसबी दे के आए और हर बार जो है रिजल्ट नहीं आ पाता है. तो मैं उनको बता रहा था ये चीज, मैम अब जब क्राइटेरिया है एक ऑफिसर बनने का, तो वही फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो दे विल नॉट टेक. मतलब Correct. वो अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कभी. और फिर मैंने एक दिन बैठा के समझाई भी ये चीज ना उनको, दैट मैम जो एक ऑफिसर होता है, एक ऑफिसर के हाथ में पहले दिन से जब एक वो लेफ्टिनेंट जाता है यूनिट में, उसके हाथ में कम से कम 10 लाइफ आ जाती है. उसके एक डिसीजन पे वो अपनी इवन जान देने को तैयार रहते हैं. तो एक यही रीजन रहता है दैट वो बहुत सोच समझ के एक ऑफिसर को सेलेक्ट करते हैं. Absolutely. Because if you put somebody who can't even take a decision properly, and उस जगह पे अगर वो एक compromise में if it is a compromise, then it will cost life of someone. Your Exactly. life is no joke. And recently I was seeing newspaper में आया था कि so many captains deficient, major These sincere requests to all the aspirants, क्योंकि the first question उनके दिमाग में क्या आएगा, अच्छा इतनी अगर इनकी deficiency तो that means they will take, और अगर नहीं लेकर लिए तो फिर आप ये भी सोचोगे अच्छा जब deficiency है तो ये ले क्यों नहीं रहे हो आप हमें. It doesn't matter to the Indian Army कि deficiency है, वो 10 लोगों से भी करा लेंगे वो काम अगर उनके वो 10 नुमाइंदे सही हैं तो. Okay, so they qualitatively, I don't think so the Indian Armed Forces ever will compromise, and I'm very certain it is never going to happen. And even if there is a situation where that kind of compromise is being done by anyone in any of the selection centers, I'm very sure very strict actions have been taken in the past and they'll continue to be taken. तो ये गलत फहमी दूर कर लो कि 2000 कप्तान की कमी है तो किसी को भी चलो भैया चलो आओ जॉइन आर्मी. It's not going to happen. It's not going to happen. Right. I will ask all the soldier is also a very important weapon of the organization. He's the most important weapon. His mind is a weapon. So they will not ever sacrifice and compromise with that. Right. I will request all the aspirants, अगर आपको कुछ पूछना है, if you have any questions, feel free to write in the chat. We'll take your questions also. Please type the questions as fast as you write in your word association. Just देखते हैं. Right. अच्छा,
like अपने questions आप लोग type कर दीजिए and if you will write in the question section That तो वो सभी को दिख will be जाएगा. better. Yeah. Yes, that's better. Yes. Is this allowed to wear in civil? Fearless soldier is asking. You can write, bro, where you have got this combat t-shirt. Okay, ये तो like my dad has given it to me. Acha. So वैसे ये they are हाँ, asking that is it allowed to wear a combat t-shirt like that, right? yes, I I don't think so there is any restrictions because it doesn't have any rank. It doesn't have anything written as Indian Army. जो आर्मी के कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स हैं उनके जो टेक्सटाइल्स अगर आप देखोगे द मटेरियल देयर इज ऑलवेज इंडियन आर्मी रिटन ऑन सो ही कैन वेरी वेल वेयर इट डोंट वरी इतने लोग कॉम्बैट पैटर्न्स में जीन्स एंड लोअर्स पहन के जाते हैं आई सी लॉट मेनी पीपल ट्रैवलिंग इन द एयरक्राफ्ट यू नो सो right. I always find it very funny that I being an army officer and you know आप फौजी होकर के आप नहीं पहन के जाते हो and दुनिया पहन रही है and I used to have a you know a little secret laugh in myself. Right. Question I am how to be consistent in this journey? How to be consistent In this journey. in this journey? Yes, that is the whole test. The test is how can you be consistent. First and foremost, like I said, your why has to be clear. Your primary goals have to be clear. And वो जो primary goals हैं उसको support करने के लिए वो जो long term goals हैं उसको support करने के लिए write down your short term goals. Segregate your aim को support करने के लिए goals को support करने के लिए what day to day tasks you have to do. And Right. it's like you know playing a game. अगर आप कोई स्पोर्ट्स पिकअप करते हो like I'm a squash player. हम initial 2-3 months of the training as a beginner आप सिर्फ वो बॉल को दीवार पे मार रहे होते you know why that is to create a muscle memory so the more you practice the more muscle memory creates so consistency को रखने के लिए जरूरी है पहला तो कि आप एक शेड्यूल बनाएं दूसरा have your own routine follow it letter and spirit have a circle of people who are supportive to this अब you have a circle of friends who have no understanding of SSB then they will only make fun of you. Right. You will be amazed, Ankush. There is something called as Badhak Tattvas given in the yogic texts. You know, Okay. they talk of something called as deterrence, Badhak Tattva in yogic text. And one of them is this Janasangha, which means don't just go and interact with everyone and give your energy. आप फालतू में अपनी energy मत waste करो ऐसे. Interact only with people for the time being till you achieve your goal. Interact with like-minded people. That will be encouraging, motivating. अगर by the way आपको आज अगर उठ के दौड़ने का मन नहीं कर रहा है तो वो आपको लात मारेंगे और आपको वो उठ के दौड़ाएंगे है ना so be with like-minded people who support you in this journey okay have a schedule be supportive read and अपना routine आप ऐसे बनाओ that you don't have time to waste on any other thing I'm not saying that become anti-social no but balance it out so आपको पता होना चाहिए कि अच्छा आज मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा इधर लगा दिया है सोशल मीडिया पे तो वो 1 घंटा कल मैं कम रखूंगा so one of the ways to have a more good like have a good routine is there's a technique called Pomodoro technique is very good for time management
उससे क्या है, अटेंशन स्पैन भी बना रहता है और आप ज्यादा एक्टिविटीज एक दिन में आप कवर कर पाते. नथिंग, जस्ट सिंपली 25 मिनट्स का टाइमर लगाओ. अपने पूरे दिन को आप 25 मिनट्स में डिवाइड करो एंड देन डिसाइड दैट व्हाट यू वांट टू डू इन दोस 25 मिनट्स. द वे टू maintain consistency in any journey or any to achieve any goal is to simplify the goal into simple task. Convert it into simple task. छोटे छोटे tasks में break down कर दो and धीरे धीरे you work on it. Then you will also enjoy. I hope it helps the person who has asked the question. Right on. Ma'am, the next question is how to stay motivated in life when you are working hard daily but your success is stagnant. मेरा तो simple फंडा है. Now, the only way you can stay motivated is if you are disciplined. If you are disciplined, you don't need motivation. If your priorities are clear, if you say, come what may, I have to do this. If your priorities are right, if you are disciplined, then you don't need any kind of motivation. Right. हम एक बच्चा पूछ रहा है, why don't army personnel wear uniforms in public like airport, restaurant? Second question, can engineer working outside directly join technical departments like DCA? Okay. Well, what is the first question? First part? Why don't army personnel wear uniform in public? Okay, so that is as per the security orders. There are instructions that itself shows the stature of security of the armed forces, and if they are in uniform in public places, then it might be a threat to the security. That is the first reason. Secondly is the sanctity of the uniform. Okay, the army ethos, the military ethos say that uniform is not a thing to be worn and shown off in a public place. That is the second reason. You can't go to a restaurant in your uniform. Okay, so that's why not even unless it is an official function. If you see, even in an official function, if it is something in the night, you will never see us wearing the uniform, the olive greens in the night in the mess. Right. There is a mess dress. There is a separate mess dress for that. Mm-hmm. Okay, so that is to maintain the sanctity of the uniform. And the second part, can somebody join directly as an engineer? Yes, sir. Technical department like TCA. stands for What is DCA? They can just this civil aviation. Like no. That must be something else. See, as far as the technical entries are concerned, all the details are there on the Join Indian Army website. You can check the eligibility if you are able to join that. I think so. This question is something else. You want to know about something else. How to overcome from failure? Why do you think something is a failure? Why don't you think that it is an opportunity for you to sit and see where you are today? हम फेलियर को इतना बड़ा बना देते हैं अपनी लाइफ में कि जितनी अच्छी चीज हो जाती है हमारे लाइफ में वो सारा it fails. All the goodness in our life fails. Don't make failures so big, but at the same time see them as learning experiences. Okay, Right. and failures are like mirrors. I always think it is it is like showing yourself the mirror कि देखो तुम कहाँ पे हो.
फेलियर जरूरी है. फेलियर्स होते रहेंगे ना तो लाइफ में जो अच्छी चीजें हैं ना उन पे कभी नजर नहीं लगेगी. छोटा बड़ा फेलियर होना चाहिए. It's okay. It's okay to fail. It's okay to fail. Don't stress yourself with this thing कि fail हो गए तो क्या होगा. I failed my first two SSB. I didn't clear in the first go. That didn't stop me. Like my mother asked me that what next. I said, Mama, होगा तो clear हो जाएगा. I will try one more time. If I'm destined, I'm trying my best. If I'm destined to clear, I'll clear. Arya Par. It's okay. It's okay. Don't make failures so big in life. आप जहां पे हो, always remember, जहां पे आप हो, वहां पे कितने सारे लोग रहना चाहते हैं. Just remember. Ma'am, TCA is Defense Cyber Agency. I don't think so. People can join directly, presently. Yes. I don't think so. Not very sure. I think so. They are, or if the people are taken only on deputation, what I have heard of. Right. Any other question anyone want to ask? Feel free to shoot your questions in the chat. To join any defense organization, एक simple mantra बताती हूँ. Clear the SSB, join Indian Army or the Indian Armed Forces, the Navy, Air Force, and you can be taken in any organization. Very right. Yeah. Any other questions? Ma'am, your review about the new combined dress pattern, is that cool? The new dress, The new digital pattern of the uniform. yes, yes. See, firstly, I'm not from the branch which looks into the nitty-gritties of why the uniform has changed. Doesn't matter whatever is the uniform. It doesn't matter. अपना काम सही ढंग से करो. Like that's more important. See, that's what. No, don't limit yourself how the uniform is looking. Is it looking cool? Is it looking this? Don't waste your time in all these things. Just simply do what you're supposed to do. Don't think. This is a very interesting. This reminds me of a very interesting incident in academy. There was a lecture which happened, and I didn't know that we are not supposed to ask questions. And I asked a question. And बाहर आए तो हमारी तो रेल लग गई फिर, है ना, कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछ लिया तुमने, है ना. See, the reason is not to discourage you to think rationally. The reason is to make you ask more intelligent questions. Okay. Army में जो बोलते हैं don't think is not that you have to be a dumb person. No. You have to think rationally. Now, this question, these days, there is this very big challenge. You have answers for everything. Google is there. So you have answers for everything. But you don't have very intelligent questions coming here. Okay, so it doesn't matter what combat uniform कैसा भी हो, काम करना है तो करना है. Okay. Yeah. Anything else? I'm getting many requests, the video requests from the students. Video requests. I would have loved to take it, but it's already 2028. So I leave it to you as a host. No, ma'am. Sure, ma'am. Now I think we have taken most of the questions. Yeah. And अगर किसी का और कुछ doubt रह जाता है, there are lot many things to ask. Please DM us, and you can share your doubts. And you can tell us more. अगर आपका कुछ भी any doubt related to defense, related to life, feel free to share it with us. Absolutely. And just a heads up. Me, Ankush, and a couple of us, we are planning something crazy. We look forward to the, aspirants joining us.
sure, ma'am. Like, अभी कुछ बच्चे हैं. I will be announcing it publicly also. Yeah, We are yeah. planning We'll plan it of out. It's still in a yes, nascent stage, but yes. just a heads up. Sure, sure. Yeah. Okay. So, ma'am, thank you so much for your giving your valuable time. और आपने सभी बच्चों को एड्रेस किया. Thank you so much, Ankush. Thank you so much, SSB Tayari team, for this opportunity. And thank you to all the aspirants, all the listeners to have spared their valuable time for this. I hope that this helps you to enhance your preparations and take you in the right direction. And all the very best. Always remember that your competition is you. Compete with yourself, introspect your inner self, and challenge your limits. These are my favorite lines written by me. But I always love to say this to all the students, all the aspirants. So always challenge yourself. Take care. Jai Hind.